My dear student friend, six-figure grid reference is my today's topic. Six-figure grid reference. It is a highly precise coordinate system used to locate an exact feature or structure or point within a specific grid square on an ICSE and CBSE topographical map. पहले क्वेश्चन देखो जो तुम फेस करोगी एक्चुअली. Answer the following question on the survey sheet number 45D7, Stings 76 to 85, Nordings 89 to 00. Give the six-figure grid reference of the post office in village Panthavada. Most welcome. Most welcome, friend. Most welcome to Realize. जो स्टूडेंट फ्रेंड आज पहली बार मो को सुन रहे हो, प्लीज एक बार देख कर आओ इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट फोर फिगर ग्रिड एंड स्केल, क्योंकि टुडे वी वांट टू फाइंड द लोकेशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी, दैट इज सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस. ये टोपोशीट में सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस है क्या? फ्रेंड प्लीज फॉलो द स्क्रीन बिकॉज इन फ्रंट ऑफ यू X is a particular location in the adjoining four-figure grid 7418. Okay ना? लेकिन X है किधर? क्योंकि टोपोशीट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस को ढूंढना पड़ेगा विद इन अ फोर फिगर ग्रिड. ठीक, इधर 2 cm into 2 cm जो इंडिविजुअल ग्रिड 7418 को देख रहे हो, practically that area 1 km into 1 km on the ground, which are surveyed by Survey of India. Clear? And then split it into 10 imaginary subdivisions. पूछो क्यों? 10 क्यों? 9 और 11 या 8 और 12 क्यों नहीं? My dear, very little student friend. पहले तुम बोलो 1 km equal to 1000 meter है या नहीं? I think you know the km is a unit of length in a metric system, equivalent to 1000 meters. So, to find how many 100-meter segments fit into 1 km, बोलो, सोचो, and then divide the total meters by the target segment. 1000 by 100 equal to 10. इसीलिए 10. Clear? Now mark the division of stings. In this case, second division. And the division of the Nordings, in this case, fifth division, corresponding to the location. Okay. The crossing point is the location of the reference point. In this case, the six-figure grid is 742185. It means the six-figure grid reference thus obtained given the location of features or place or point to the nearest 100 meters. Okay. तुम जरूर सोच रहे होंगे मो नंबरिंग कैसे होगा? Friend, the subdivisions are numbered exactly like a ruler or a graph, starting from the main grid line, like 0. The line itself on the left for stings and a bottom for Nordings. 1. The first imaginary 1 by 10th division. Then second, third, etc. And 9. The ninth division closest to the next grid line. Okay. Another diagram में और एक example देखो. 4-figure grid reference 8213. देखो, ठीक. Now divide each km into 10 parts, both vertically and horizontally. Mark the division and six-figure grid reference of P. Answer is 82, 3, 13, 3. 823 133. My dear student friend, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1. Give the six-figure grid reference of Q. देखो, लेकिन फ्रेंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई एक पॉइंट सपोज y स्टिंग्स और नॉर्डिक्स के ऊपर आ गया तो क्या होगा? देखो, 4-figure grid reference 8412 point y. Divide each km into 10 parts.
Yeah, vertically and horizontally. Mark the division of stain, in this case, 0 division of 84, है ना? And the division of the northings, in this case, fifth of 12 km grade. Therefore, location of y equal to 840125. या नॉर्दिक्स में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तब 6th प्लेस में 0 ही लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन में आओ. विलेज पांथावाड़ा देखो है या नहीं, मिल गया ना. So first identify the 4-figure grid reference. So 4-figure grid reference is 8199. Now identify the precise location. Post office. Friend, symbols for a post office PO and post and telegraph office रहेगा. देखो इधर में भी है. इस बार divide each km into 10 parts. So answer is now question number 2. Of course, तुम्हारे लिए give the 6-figure grid reference of flow direction of river Sipu. The flow direction of the river is indicated by a black arrow placed along the blue river line. Okay? देखो, गौर से देखो. I think तुम जरूर कर पाओगे. Yet if you have any confusion, feel free to comment down below. Bye-bye.